Hello and welcome, dear viewers. Cheers to being limitless. And now let's look at this problem I have taken up from trigonometry. Very interesting problem, and it is this much in length. So, apart from the problem solving, one very important thing that we are going to learn in this video is having that patience to read that problem. Many students have even forgotten this basic aspect of problem solving. In this age of Instagram and YouTube Shorts, our attention span has been destroyed to such abysmal levels that even a 5-second reel, we do not have the patience to watch it. We decide in 2 seconds कि I'm not gonna watch this and we skip it, we ignore it. So how are we expected to read this entire paragraph and then solve problems based on it? But let me tell you, this is one of the easiest problems that you are going to encounter if it comes in the JEE exam. And the last year was a testament to this fact. The last year's JEE Advanced paper was one of the easiest in recent years. But the problems were so lengthy, they looked so difficult that only those who had the patience and that confidence in reading the problem and understanding it could solve it. And the answers were like literally very, very, very easy to solve. Only you had to strip apart the concepts that were making it difficult, that were making it look difficult even. All right. So I implore you to read this entire paragraph, right? Derive meanings from it, derive mathematical statements from it, and try to make diagrams to make your life easier. But this problem is very, very easy. You can solve it after like attending the very first lecture on trigonometry that we do in JEE. And let me tell you beforehand, the answer is 7. The answer of this question is 7. So now I want you to think on how did you get the answer 7. I guess this question works in a better way if you know the answer beforehand. How will you convince yourself कि इसका आंसर 7 होने वाला है after reading everything? All right, and again, let me assure you, this is very, 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 very easy, like a cakewalk. But वो समझ होनी चाहिए कि हाँ ये आसान है. वो पूरे सवाल को पढ़ने का you need that guts, you need that patience, you need that attention span, and that will come only when you sit down and solve problems. There is no shortcut to it. You will gain that confidence only if you sit down and solve hundreds and hundreds of problems in the span of 2 years. Then you can be like as confident as much as you can be in that paper, and like that even these problems will not seem difficult to you. They are not even difficult, I mean not seem like hard for you on paper. Okay, and you will be like हाँ ये मैं पढ़ लूंगा समझ जाऊंगा तो हो ही जाएगा. All right, so again you can pause the video and इसका explanation बहुत ही आसान है, 2 मिनट में मैं समझा दूंगा, तुम समझ भी जाओगे. एंड उसके बाद 5-10 मिनट इस पे सोचो, इसके डायग्राम्स रेलिवेंट डायग्राम्स बनाओ, उसके बाद इसको ट्राई करते हैं. ऑल राइट. ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार. सी के डिनोट्स a circle with radius k units and center at origin. on a circle ck, एक पार्टिकल है जो सर्कल ck पे k यूनिट्स मूव कर रहा है, एंड वो मूव करके रेडियली अपवर्ड्स एक दूसरे सर्कल पे चला जाता है, एंड उस पे उस k+1 यूनिट्स मूव करता है और ऐसे चलता रहता है. पार्टिकल 1 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉसेस द पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस for the first time on circle C and find the value of n. Okay, so let me draw my axis. All right, so the particle is at 1 comma 0, so here. All right, and then it moves on the start. Let's start with k equal to 1. Okay, it will natural number है ना, तो k will start from 1.
तो देयर इज अ सर्कल C1 जिसका रेडियस है 1 यूनिट एंड सेंटर है ओरिजिन, बिकॉज ऐसे ही डिफाइंड है वो। सी के का रेडियस के यूनिट्स होगा तो C1 का रेडियस 1 यूनिट होगा। तो इस सर्कल पे ये पार्टिकल 1 यूनिट मूव करता है, तो यहाँ पहुंच जाता है। लेट्स से ये 1 यूनिट डिस्टेंस मूव हुआ। ये मूवमेंट करने के बाद ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा, कहाँ पे, टू अ सर्कल C2 जिसका रेडियस है 2 यूनिट्स एंड अगेन सेंटर ओरिजिन है। तो रेडियली आउटवर्ड ये यहाँ चला जाएगा। रेडियस विल इंक्रीज, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, रेडियस विल इंक्रीज और यहाँ मूव चला जाएगा। फिर ये ऐसे 2 यूनिट्स मूव करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा और सर्कल C3 पे चला जाएगा जिसका रेडियस 3 यूनिट्स है, सेंटर ओरिजिन ही है। और यहाँ पे ये से 3 यूनिट्स मूव करेगा। फिर ये रेडियली आउटवर्ड मतलब यहाँ से जंप करके यहाँ सर्कल C4 पे चला जाएगा और फिर 4 यूनिट्स मूव करेगा, है ना। फिर ऊपर जाके फिर 5 यूनिट्स मूव करेगा, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ, यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर जंप करके यहाँ चला गया, फिर यहाँ 2 यूनिट्स मूव किया, फिर ऐसे चला गया, फिर 3 यूनिट्स मूव किया, फिर ऐसे चला गया, फिर 4 यूनिट्स मूव किया, फिर सीधा रेडियली आउटवर्ड, फिर 5 यूनिट्स मूव करेगा, फिर रेडियली आउटवर्ड, फिर 6 यूनिट मूव करेगा, ऐसे जी चलता रहेगा। तो आंसर ये है कि ये एक्स एक्सिस को पहली बार कब क्रॉस करेगा, तो इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा, है ना। तो ये कौन सा सर्कल है, जब वो when the particle is crossing x axis for the first time, on what circle will it be? Is it C5? Is the circle C5 or C7 or C9? कौन सा सर्कल है वो? मतलब उस समय उस सर्कल का क्या रेडियस है जो मूव कर रहा है। तो ये कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, बहुत आसान है। हम इसको पोलर डायरेक्शंस में देखते हैं इंस्टेड ऑफ द कार्टेशियन डायरेक्शंस। तो अगर कोई सर्कल, कोई पार्टिकल है जो इस सर्कल पे जिसका रेडियस r यूनिट्स है, उस पे r यूनिट्स मूव कर रहा है, ये तो हो रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग k यूनिट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस k। इफ दिस इज 1 then this is 1, if this is 2 then this is 2, if this is 3 then this is 3, the radius is 3, all right। तो ये कितना रेडियंस हुआ, 1 रेडियन। Radians literally are defined in this manner. If a circle moves r units on a circle of radius r units, if a particle moves r units on a circle of radius r units, the distance covered will be 1 radian in the on the perimeter of the circle. Literally इस तरह से radians are defined. All right. तो if the particle is here and उसको x axis cross करना, तो it will have to go like this. It will have to cover 2 pi radians, right? Because it has to move the x axis। तो हम रेडियली इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। That to cross the x axis from where it is initially, it is on the x axis itself, it has to move an additional 2 pi radians. Now 2 pi is approximately 6.28. So at circle C6, it will have covered, at every circle it is covering 1 radian. All right. At every circle, the distance is increasing and the radius is also increasing. So the radial movement will remain same. At every circle, the particle is moving 1 radians. All right. And at circle C6, particle will move 6 radians. Okay. So यहाँ पे हम and we have covered 6 circles. We are on circle C6 and we are somewhere here just shy of that 6.28 mark. We are at 6 radians.
So at the seventh circle at C7, it will go from 6 to 7 and 6.2 it will come in between. So it will be at circle C7. On the seventh try, it will get. It stops at 6. It cannot achieve that 2 pi mark when it is at circle 6. So when it will go to circle 7, it will definitely cross that barrier. Okay. So it will be at circle C7. So the value of n will be 7. अब आप ही बताइए क्या इसमें डिफिकल्ट था. There was no difficulty wise there was no aspect to it. बट ये पूरा डायग्राम पढ़ के समझना वो क्रूशियल पार्ट था. Many students उधर ही गिव अप कर देते हैं जेईई एडवांस में. They don't even bother to like read the problem and then move on to solve physics and chemistry instead. No, for mathematical problems you need that extra few extra seconds. Don't like hesitate to spend extra 10-15 seconds on it to understand the problem completely. पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा कि करना क्या है. वहाँ पे यू डोंट वहाँ पे हेजिटेट मत करो टाइम वेस्ट करने से. वो टाइम वेस्ट नहीं, वो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो. ओके सो लाइक प्रिटी अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम. आई होप इससे आपको कुछ नया ही सीखने को मिला होगा क्योंकि एडवांस मास्टर क्लास के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. दे डोंट जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे टेस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कैरेक्टर, your confidence, your patience, your practice, your efforts, your sacrifices. Everything is measured, everything is evaluated. So I hope you are on that path. All right. Thanks for the watch. Keep subscribed to the channel for more everyday improvement. Till then, be happy and stay limitless of your dream of an IIT. Thank you.